गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी और गवर्नेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी रिसेंटली क्वार्टरली बुलेटिन जो है अप्रैल से जून के मंथ्स का मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो रिलीज़ किया है, जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा दे रहा है। जिसके मुताबिक अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 6.6% पर पहुंच गया है, जो कि अभी तक का सबसे लोएस्ट है जब से पीएलएफएस सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है। वो कब से कंडक्ट किया जा रहा है? साल 2017 से। तो मतलब प्री पैंडमिक टाइम पर भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था उससे भी नीचे अब जो इस टाइम पर जा चुका है। लेकिन फिर भी 14 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर नेशनल एवरेज से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अभी भी। तो ये फाइंडिंग्स देखने से पहले तो हम जो है कुछ बेसिक्स देखेंगे। तो ये पीएलएफएस सर्वे होता क्या है देखते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने 2017 से ये सर्वे कंडक्ट करना शुरू किया है कि लेबर फोर्स का डेटा जो है वो फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल्स पर हमारे पास होना चाहिए। अब इसमें की एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट शॉर्ट टाइम इंटरवल में, 3 महीने के इंटरवल्स में, हर अर्बन एरियाज़ में जो है वो उसमें करंटली वीकली स्टेटस भी जो है वो देखा जाता है। इससे हम एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स जो हैं वो रूरल और अर्बन एरियाज़ में एनुअल लेवल पर निकाल पाते हैं। तो अगर हम देखें कि कौन से स्टैटिस्टिक्स निकाले जाते हैं, पहला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसमें जो कि है आपका परसेंटेज ऑफ पर्सनस जो लेबर फोर्स में इन द पॉपुलेशन काम जो है वो अवेलेबल है। मतलब या तो वो वर्क कर रहे हैं या फिर वो अवेलेबल हैं वर्क करने के लिए, वो काम ढूंढ रहे हैं। दूसरा होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, जो लोग एम्प्लॉयड हैं एक पॉपुलेशन में उनको हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कहेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा? परसेंटेज ऑफ पर्सनस जो अनएम्प्लॉयड हैं अमंग पर्सनस इन द लेबर फोर्स। अब हम ऐसी ही एक्टिविटी स्टेटस के बारे में अगर बात करें तो यूजुअल स्टेटस क्या है कि पिछले 365 दिन में यूजुअल एक्टिविटी स्टेटस क्या रहा है, और करंट वीकली स्टेटस मतलब लेबर फोर्स कितनी अवेलेबल रही है पिछले जो है कुछ वीक्स में। तो ऑफ कोर्स यूजुअल स्टेटस, क्योंकि जो वो साल का देखा जा रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, तो इसलिए वो ज़्यादा ही वो इसलिए कम होगा एज़ कम्पेयर टू करंट वीकली स्टेटस। क्योंकि क्या होता है कि साल में तो लोगों को कहीं ना कहीं काम मिल ही जाता है एज़ कम्पेयर टू वीक के अगर हम लेवल पर देखें। तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट के जो है बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि आप आउट ऑफ जॉब हो लेकिन अवेलेबल हो आप जॉब लेने के लिए, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जॉबलेसनेस नहीं हुआ। जॉबलेसनेस का मतलब तो ये भी हो सकता है कि आप जॉब चाहते ही नहीं हो, है ना। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट को मेजर कैसे करते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट को रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयड टू द लेबर फोर्स के साथ मेजर किया जाता है। और लेबर फोर्स क्या होती है? जितने भी अवेलेबल होते हैं लोग, चाहे वो एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है। टोटल लेबर फोर्स के अंदर कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट उससे हम निकाल पाते हैं। अब अगर हम देखें इस सर्वे के हाइलाइट्स, तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रहा है 15 साल या उससे अबव के लोगों में, वो 46.2% से 47.8% के बीच में रहा है ड्यूरिंग प्री पैंडमिक पीरियड, ठीक है। और जो अप्रैल से जून के पीरियड में देखें तो 48.8% पहुंच चुका है LFPR, जो कि हायर है एज़ कम्पेयर टू प्री पैंडमिक पीरियड। वर्किंग पॉपुलेशन रेट जो है वो 41.8% से लेके 44.1% के करीब रहता था प्री पैंडमिक पीरियड में, लेकिन अब वो बढ़ गया है। मतलब लोगों के पास ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आ गई है। 45.5% वो पहुंच चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो प्री पैंडमिक पीरियड से 6% लोअर लेवल पर पहुंच चुका है। जो स्टेट्स या यूटीज़ जहां पर हायर दैन नेशनल एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया है, तो वो हिमाचल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स हैं जहां पर अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। जहां पर कम है नेशनल लेवल से, वो स्टेट्स हैं दिल्ली, गुजरात, वेस्ट बंगाल और बिहार। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। ये टॉपिक भी आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्यूरेटिव पिटीशंस जो कि वोडाफोन और भारती एयरटेल ने फाइल की हैं
एरिथमेटिकल एरर्स जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लेकर आ रहा है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ के केसेस में, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्यूरेटिव पिटिशन डाली गई है इन दोनों कंपनीज द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। तो क्यूरेटिव पिटिशन एक लास्ट रिजॉर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि कोई फाइनल रूलिंग के ऊपर जो है वो आप क्यूरेटिव पिटिशन डाल सकते हो। तो बेसिकली यही एक फाइनल रूलिंग बन जाती है अगर एक्सेप्ट हो जाए तो, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आप कोर्ट को कह रहे हो कि आप अपनी खुद के डिसीजन को रिव्यू करो, रिवाइज करो, क्योंकि जो है फाइनल ऑप्शन या लास्ट ऑप्शन है जस्टिस एक्वायर करने का हमारे पास। इसमें इसको इसलिए जो है वो एक्सेप्ट कई बार कर लिया जाता है ताकि किसी भी तरह का मिस कैरेज ऑफ जस्टिस ना हो या फिर अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके। अब इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ? ये ओरिजिनेट हुआ केस ऑफ रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, अनदर केस 2002 में। इसमें जो कोर्ट ने आर्गुमेंट एक्सेप्ट किया वो ये है कि लैटिन मैक्सिम होता है एक्टस क्यूरी निमनम ग्रेविबिट, मतलब एक कोर्ट के पास एक कोर्ट जो है वो किसी के भी साथ प्रेजुडिस नहीं हो सकता। इसीलिए जो है इसी कंसेप्ट को बैक करने के लिए, नेचुरल जस्टिस को प्रिवेंट करने के लिए कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटिशंस को जन्म दिया। अब आर्टिकल 137 भी जो है ब्रॉडली इस क्यूरेटिव पिटिशन के आइडिया को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अपनी किसी भी जजमेंट को रिव्यू करने के लिए, अगर वो मैटर खासकर कुछ लॉज से कंसर्न हो, आर्टिकल 145 से रिलेटेड। क्राइटेरिया क्या होता है क्यूरेटिव पिटिशन को एडमिट करने का? अगर वायलेशन हो रही है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की और कोई पर्सन को जो है हेयर नहीं किया गया कोर्ट द्वारा ऑर्डर पास किए जाने से पहले, या फिर जज जो है वो फुली फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं कर पाए कि उनमें कुछ बायस थी उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, तो भी जो है क्यूरेटिव पिटिशन को एडमिट कर लिया जाता है। क्यूरेटिव पिटिशन को जो है बहुत ही रेयरली एडमिट किया जाता है, इसको रेगुलर नहीं बनाया जा सकता। तो क्यूरेटिव पिटिशन को सुनता कौन है? तो एक बेंच ऑफ 3 सीनियर मोस्ट जजेस, और जो जजेस जिन्होंने ओरिजिनल जजमेंट पास की है अगर वो अवेलेबल हों तो वो भी इसको सुनते हैं। जनरली इसको जजेस के चैम्बर में ही सुन लिया जाता है, और बेंच जो है अगर उसको लगता है कि कोई मेरिट नहीं था फिर भी क्यूरेटिव पिटिशन डाली गई है तो एग्जाम्पलरी कॉस्ट भी जो है वो पिटिशनर के ऊपर डाली जा सकती है कि वो उसने टाइम जो है वेस्ट किया है जुडिशरी का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सैटेलाइट स्पेक्ट्रम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी और साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इलॉन मस्क वर्सेस मुकेश अंबानी की बैटल कि क्या सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को ऑक्शन किया जाना चाहिए या एलोकेट किया जाना चाहिए, उसका जो है उसको अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अपने हाथ में ले लिया है। तो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के बारे में अगर हम देखें तो सैटेलाइट या ऑर्बिट स्पेक्ट्रम जो है वो रेडियो स्पेक्ट्रम का ही एक सेगमेंट है। तो स्पेक्ट्रम जो है बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं। ये एक लिमिटेड रिसोर्स होता है हर कंट्री के लिए, और इसको सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, वेदर सैटेलाइट सर्विसेज, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये फ्रीक्वेंसी कैसे डाटा ट्रांसफ़र को अफेक्ट करती है? आपने सुना होगा ना 700 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़, ऐसे ये फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ये डिफ़ाइन करती है कि एक कितनी बार जो है वो जो वेव होगी वो ऑसिलेट करेगी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। मतलब अगर 700 मेगाहर्ट्ज़ है तो मतलब 700 टाइम्स वेव ऑसिलेट कर रही है, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी मतलब उतना ज़्यादा डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकेगा पर सेकंड। तो मतलब हायर फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होती है उसमें जो है ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो रिडक्शन हो जाएगी सिग्नल स्ट्रेंथ की। इसीलिए अगर जो आपका हायर जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसमें डेटा की स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसका सिग्नल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो अब ये जो सैटेलाइट की स्पेक्ट्रम होती है, इससे जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन होती है इसमें ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है ITU डील करता है और एलोकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज ग्लोबली करता है। अब ITU है क्या? यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड। ये गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर बॉडीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करती है।
1867 1865 में एज इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन इसको एस्टैब्लिश किया गया था। मेंबरशिप अगर हम इसकी देखें तो 193 कंट्रीज़ इसकी मेंबर्स हैं, 800 प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ भी इसकी मेंबर्स हैं। जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ये ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट ऑर्बिट्स को एलोकेट करता है, टेक्निकल स्टैंडर्ड सेट करता है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का जो है ये काम करता है। इंडिया इसका ITU का मेंबर 1869 से है और रेगुलर मेंबर रहा है ITU काउंसिल का सिंस 1952। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। जो तंजानिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रिसेंटली इंडियन प्रोग्राम्स जैसे कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को ज्वाइन करने का फैसला लिया है। तो ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स कर रहे हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार और प्यूमा। अब ये 97 रेंज कंट्रीज़ के लिए ओपन है जो कि नेचुरल हैबिटेट्स हैं इन बिग कैट्स का। अब ये एक प्लेटफॉर्म देंगी मेंबर नेशंस को कि वो अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज़ शेयर कर सकें और सपोर्ट एक्सटेंड कर सकें रिकवरी एफर्ट्स के लिए इन पोटेंशियल हैबिटेट्स में। अब इनिशियली पहले 5 साल के लिए तो इंडिया ने जो $100 मिलियन की जो है असिस्टेंस दी है उससे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस चलेगा। उसके बाद में जो है ये सस्टेन करेगा खुद ही मेंबरशिप फीस और कॉन्ट्रीब्यूशंस से। ठीक है। अब अगर हम इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखें तो जनरल असेंबली जो है जिसमें सारे मेंबर कंट्रीज़ होंगे, काउंसिल जिसमें कि एटलीस्ट 7 या फिर मैक्सिमम 15 मेंबर कंट्रीज़ होंगे, ठीक है, और जिसका एक सेक्रेटरीट भी होगा, उसके थ्रू ये गवर्न होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज चक्रवात। यह टॉपिक आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट या सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। 2023 का एडिशन ऑफ एनुअल जॉइंट एक्सरसाइज चक्रवात जो है इंडियन नेवी इसको होस्ट कर रही है। तो बेसिकली एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है जो कि 2015 में शुरू की गई थी। ये मल्टी एजेंसी एक एक्सरसाइज है जिसमें तीनों सर्विसेज हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और कई डिज़ास्टर रिस्पॉन्स ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और अगर हम देखें तो 2023 का एडिशन जो है इसमें कुछ 8 कंट्रीज़ इंडियन ओशन रीजन की वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। जो 2023 का एडिशन है वो इंडियन नेवी गोवा में होस्ट कर रही है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is periodic labor force survey. This topic is important for your governance and economy sections both. So as per the quarterly bulletin of PLFS, which has been released by the Ministry of Statistics, urban unemployment rate in April to June period has fallen down to 6.6% level. Okay, so this is despite the fact that our urban unemployment rate was at its lowest since the PLFS bulletin was launched, and nearly 14 states had a higher urban unemployment rate than the national average. So what is PLFS? PLFS was launched by National Statistical Office in 2017, and the aim is to estimate the key employment and unemployment indicators in the short time interval of 3 months for the urban areas only, and also the currently weekly status, which basically sees the data 7 days preceding the date of survey. So the aim of course is to estimate the unemployment and employment indicators in both a usual status and currently weekly status in both rural and urban areas annually. So to understand it, we have to see these terminologies which or indicators which are used by PLFS. First of course is the labor force participation rate, which is the percentage of people who are engaged in the labor force. They are either working or they are seeking or they are available for work in the population. So this is the broadest term. Then there is worker population ratio, which can be defined as the percentage of employed persons in the population. Then there is unemployment rate, which is defined as the percentage of people who are unemployed among the persons in the labor force. So as if we look at the time frame, then there is first the usual status, which is concerned with the period of the last 365 days preceding the date of survey. Then there is current weekly status,
which is the labor force according to the weekly numbers. And of course, as per the prevailing knowledge, the usual status will always be lower than the current weekly status, because there is very good chance that an individual would find work over a year as compared to a week. Okay. What is the meaning of unemployment? So, as per International Labour Organization, unemployment means being out of job but being available to take a job and actively engaged in searching for job. Okay, so that's why unemployment cannot be called as joblessness, because an individual who has lost work but does not look for another job is actually not unemployed, but he is jobless. Okay. So how this unemployment rate is measured? So unemployment rate is measured as the ratio of unemployed to the labor force, and the labor force is defined as the sum of the sum of the employed and the unemployed. Okay. So what are the highlights of this quarterly bulletin of PLFS in urban areas? So LFPR, that is the labor force participation rate for persons of age 15 and above, ranged between 46.2 to 47.8% in the pre-pandemic period. But now, in April to June 2023 period, 48.8% is the LFPR, which is higher than the one observed during pre-pandemic period. Even if we look at the WPR, that is the worker population rate, then it ranged between 41.8 to 44.1% during pre-pandemic period. But also, this has also increased, which is a good thing. It has now increased to 45.5%, which is much higher than the pre-pandemic period. Even the unemployment rate is 6% lower than the unemployment rates observed in the quarters of pre-pandemic period. Okay. So but there are certain states which have unemployment rate which is higher than national average. So these states are lagging in terms of employment, where these states are Himachal Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, etc. And the states which have posted a lower than national average, which have performed well, these are Delhi, Gujarat, West Bengal, and Bihar. So the next topic is curative petition. This topic is important for your polity and your governance sections both. Supreme Court has recently agreed to hear curative petitions which have been filed by Vodafone Idea and Bharti Airtel, citing arithmetical errors in calculation of AGR dues by Department of Telecommunication. So what is a curative petition? So it is the last resort to the highest court, and it can be petitioned for redressal of grievances, but this ruling would be final. Okay, so it is basically a way to ask the court to review or revise its own decision, and it is filed after a review petition is dismissed or used. It is the final and last option for the people to acquire justice, and it is meant to ensure that there is no miscarriage of justice. So how did it evolve? So it originated from the case of Rupa Ashok Hurra versus Ashok Hurra, another case of 2002. So court used the Latin maxim actus curiae neminem gravebit, which means that an act of court shall prejudice no one. Okay, it is also constitutionally backed. Article 137 of the Indian Constitution broadly supports this idea of curative petition, because it states that Supreme Court has the power to review any of the judgment which it has made or pronounced by it, if the matter concerns the law and the rules are made under Article 145. So what is the criteria for admission? So the petition is generally admitted if there has been a violation of the principles of natural justice and the petitioner was not heard by the court before passing an order. It is also admitted when a judge fails to disclose the facts, which raises the apprehension of a bias. The Supreme Court also held that curative petitions must be very rare rather than regular. Okay, so who hears these curative petitions? So generally, the petition must first be circulated among a bench of three senior most judges and the judges who pass the concerned judgment if they are available. Then this curative petition is usually decided by judges in a chamber,
In the case that the bench finds that this petition is without any merit and it is vexatious, then they may impose exemplary costs on the petitioner for wasting the time of judiciary. So the next topic is satellite spectrum. This topic is important for your economy and your science and tech sections both. So Elon Musk versus Mukesh Ambani battle on whether to auction or allocate satellite spectrum has attracted intervention from the Prime Minister's office. So we have to understand what is satellite spectrum. Satellite or orbit spectrum is a segment of radio spectrum which is made available when satellites are placed into orbit. So this spectrum is part of the broader radio frequency spectrum, and this spectrum is a limited source for every country, and it is utilized by firms to implement satellite broadcasting, communication satellites, and weather satellite services. So how does this frequency impact the data transfer? We have heard about 700 megahertz, 1800 megahertz, or even 4 gigahertz, 5 gigahertz frequencies. So in simple terms, the frequency of a signal refers to the number of times this wave oscillates per second. Okay, so for example, if it is 5 gigahertz, it means that the wave would oscillate 5,000 times per second. Okay, so the higher the frequency, the faster the waves appear to move, and of course that's why they would be able to carry more data which can be transmitted per second. However, higher frequencies have a limitation that they have shorter wavelengths. That's why it can lead to reduction in the strength of the signal over a distance. Okay. So for simple understanding, you may be knowing that if you have 2.4 gigahertz of Wi-Fi at home, it may be low in speed, but its coverage would be higher in your or greater in your home as compared to a 5 gigahertz Wi-Fi. Okay, so the International Telecommunication Union, or the ITU, is the United Nations institution which coordinates the allocation of these frequencies globally. Okay, so this is the United Nations specialized agency for information and communication technologies. It's an intergovernmental organization which coordinates between governments and private sector bodies with respect to global telecommunication and information communication technology services. It was established in 1865 as International Telegraph Union, and its headquarters is located in Geneva, that is in Switzerland. It has a membership of about 193 countries and 800 private sector entities. It allocates the global radio spectrum and satellite orbits. It also coordinates and sets up the technical standards which are related to ICT or telecommunication. It aims to improve access to ICTs, okay, in underserved communities also. India has been an active member of ITU since 1869, and it has been a regular member of ITU Council since 1952. Okay. So the next topic is International Big Cat Alliance. This topic is important for your environment section. So Tanzanian president has recently approved the flagship Indian programs like the International Big Cat Alliance and the Global Biofuels Alliance, which was launched by India. So this International Big Cat Alliance was launched by India in April 2023 for the conservation of 7 big cats: tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar, and puma. So this is open to 97 range countries, which are the natural habitat of these big cats. So this will provide platform to the member nations to share knowledge and expertise and extend their support to recovery efforts in potential habitats. So how it would sustain itself? After the first 5 years, which will be supported by India's total grant assistance of $100 million, the IBCA is expected to sustain itself through membership fees and contributions from other institutions and the private sector. So it is governed by a General Assembly which consists of all member countries. Then there is also a council of at least 7 but not more than 15 members, and it is elected by a General Assembly for a term of 5 years, and it will also have a secretariat. Okay, so the next topic is exercise Chakravat. This topic is important for your disaster management section or also your security section. So the 2023 edition of the annual joint humanitarian assistance and disaster relief exercise Chakravat is being hosted by Indian Navy at Goa. So it's an annual joint
humanitarian assistance and disaster relief exercise. Its first edition was launched in 2015, and it has transformed itself into a multi-agency endeavor now. It involves participation of all three services, paramilitary forces, as well as response organizations, NGOs, academic institutions, and international organizations. This year's edition has seen participation from 8 countries of Indian Ocean region also, and this year's edition is being hosted by the Indian Navy at Goa. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.